KP classes dedicated to excellence. Hello, everybody. So today in this particular series, we are talking to our ex-students. Okay, most of the students who have cleared the respective examination like NIFT, NIT, CEED, UCEED, etc. Right. So today we have with us Priyanshu Rohilla. He had a background in BBA, sorry, which was BBA, which was a 3 years undergraduate program, and he opted to go for design. And last year he got selected for CEED examination, and he got a call from IIT Hyderabad and another college, right, Priyanshu? Yes, ma'am. IIT Roorkee and DTU also. IIT Roorkee and DTU as well. He cleared the written round, he cleared the interview round, but unfortunately, he did not meet the criteria of +2, +3 format of all the design examinations. So he could not take an admission last year. Then he again prepared this year, and fortunately, he got selected in NIFT, and his rank was All India rank 12. In a particular category, and his general rank was 103. So I congratulate Priyanshu for getting into NIFT Delhi. Okay, and welcome to our session today at KB classes. So Priyanshu was our student, and he had been very, very diligently preparing for a master's program in design. And today he's here to discuss about his whole journey and how he prepared and how he faced some difficulty, but he tried to overcome that, right? So, hi Priyanshu, how are you? Hi, ma'am. Fine, ma'am. Fine, okay. So, really excited to join NIFT New Delhi. I have been seeing your DP, you're changing your DP, which is right in front of NIFT campus, right? Yes, ma'am. So, Priyanshu, now how did design happen? थोड़ा सा आप हमें background बता दीजिए. I already told everybody that you have a background in business administration. तो business administration से design का कैसे आपने सोचा? Ma'am, I've pursued the extracurricular activity like extra classes for designing courses like graphic designing. I've learned certain software like Illustrator and After Effects. So I got an interest in such kind of things. So my brother told me that if you are interested in this kind of thing, why you don't apply for design? But I don't think that design is like a person who do such thing on their cyber cafe or such places. So after getting more information and getting the contact with you, I get to know more about design, and I started recognizing that design is more interesting than what I thought before by applying in such courses. I'm very happy कि आपको preparation stage में ही ये समझ में आ गया कि design कितना diverse है. And while आप हमारे साथ prepare कर रहे थे, आपने बहुत सारी I hope you got lot of exposure of the design industry also, right? During the preparation itself. Okay. Yes, ma'am. So, what was your whole strategy all about? जब आप CEED का एग्जाम देने गए थे या जब आप NIFT का एग्जाम देने गए थे और प्रिपेयर कर रहे थे हमारे साथ, तो what was the strategy that you had? The strategies are basically about the pattern. How do I gonna solve the pattern? First, I just read the question which are not meant for me, because there are more questions which are go beyond my limit. So I first read the question and then start using my common sense that how much time I'm going to spend on it. And if it's spend the time, then I just keep that question and move forward. Similarly, in CEED, I'm most focused on the logical part, not the mathematical, which are more interesting than we thought about. Because in CEED, the logic is more have more weightage than the other part. Even the drawing has logical concept while applying on the board or on the paper. So I think you should think about logic, how things gonna happen, how things gonna change while we applying in a daily basis or in a paper or an exam anywhere.
So my strategy was always about like um, Yes. So so drawing the practice. if yes the the strategy is more about like मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है वैसे. आई जस्ट लाइक टू ड्रॉ समथिंग विच आई लाइक टू ड्रॉ. अगर मुझे कोई चीज दिखती है तो उसको ड्रॉ करना मेरा पहला मतलब पहला इंटरेस्ट है कि किस चीज को जो मुझे दिखता है उसको पहले ड्रॉ करूँ मैं. अगर ड्राइंग में कुछ कोई प्रॉब्लम आती है फिर मैं सुरभि मैम में किसी और क्लास टीचर से पूछता हूँ कि मैम इसमें ड्राइंग में मेरी मतलब स्केचेस में मेरे एरर आ रहा है तो इसको कैसे ठीक करें तो ये कैसे करें. तो ड्राइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लियर करने का. और अगर बीबीए का मतलब बीबीए स्टूडेंट हूँ मैं तो मुझे एज सच कि मुझे प्रोजेक्ट जो मिलते थे वो बहुत डीप मिलते थे. किसी को एनालाइज करके प्रोसेस करना, किस चीज को मतलब उसका स्ट्रेटजी निकालनी है. तो ये एक फील्ड है जिसमें मैं चाहता था कि डिजाइनिंग में अगर मैं कुछ चीज को बनाना चाहता हूँ, मैं जिसको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस अपने अपना पैशन को, तो डिजाइन फील्ड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत अच्छा करियर है जिसमें आगे जाकर परस्यू कर सकता हूँ. तो अगर मैं एज एन एमबीए भी मेरा चल रहा था कि मैंने शुरू में आपको बताया कि एमबीए मैं भी चाह रहा था करना. मेरे पापा फोकस कर रहे थे कि तू एमबीए की तरफ शिफ्ट हो, डिजाइन में मत जा. पर लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसलिए डिजाइन में था क्योंकि मैं इस चीज के अंदर बहुत खो गया था, क्योंकि मैंने बहुत इस चीज के बारे में पढ़ा है, बहुत चीज के बारे में समझा है. जो मैंने ड्राइंग स्किल्स में मैंने इंप्रूवमेंट लाई है, जो मैंने टीचर्स ने मुझे हेल्प करी है चीज में, मतलब लॉजिकल थिंग को समझने में, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मेरे इंप्रूव करने में. तो मुझे लगा कि एमबीए तो बहुत बच्चे करते हैं, डिजाइनिंग उन लोगों का होता है जो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं या फिर बहुत लॉजिकल कर सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस. ऑब्जर्वेशन स्किल भी अच्छी होती है उनकी, और जो चाहते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं. तो डिजाइनिंग इज वेरी गुड करियर. एंड मैं I'll add something over here. I'll add something over here, Priyanshu, क्योंकि since I know your design journey, तो जैसे आपने बोला ना कि डिजाइन में आप बहुत कुछ कर सकते हो. I had personally also seen that you had explored a lot. You yes went beyond the structure जो curriculum हमारा था. You went beyond and you did a lot of research and you came back with making models and everything. And over here, I would like to tell the viewers that when he was about to appear for NIFT examination, and last year also when he was appearing for all these interviews and everything, it was online interview, right, Priyanshu? It was everything was online online. interview. Yes, And in fact, he prepared with us also online itself. He met us few times for feedbacks and everything, but this whole preparation was online. And he got a lot of time to utilize and do his own research. Also, this year this year also NIFT had conducted the interview online, although the rest of the other examinations were offline. तो मैंने प्रियांशु को बहुत स्पेसिफिकली एक चीज बोली थी. प्रियांशु हैड मेड सम अमेजिंग मॉडल्स. एक yes sir. वैक्यूम क्लीनर था और क्या था, एक दो और चीजें थी. So they were really Vacuum cleaner. interesting. Yes ma'am. Vacuum cleaner, battery, refrigerator, refrigerator model, miniature refrigerator model, and cupboard. All such project was Vacuum done with cleaner my was a functional product. It was yes actually ma'am. functioning like this small vacuum cleaner. So I told him that whenever you are sitting for your interview, so please keep those products handy and make it a point that you show them to the panelists. And I think आपने इंटरव्यू में दिखाया भी था, अपना मॉडल दिखाया था, और इंटरव्यूअर्स निफ्ट के इंटरव्यू में था. So they both laughed at my project which I've showed them. They कह बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा बहुत कम आते हैं बच्चे दिखाने. It was very good. I would want a separate maybe session with you where you are showing and explaining those models. We'll have that for our viewers. So for the interview, I had advised Priyanshu. Of course, जो basic हमारा interview preparation होता है वो तो था ही. But I said that you need to show your talent in terms of what models you had made. And the panelists were really very happy to see those working models. And they suggested that you are so technical, so why don't you go into the IITs? But उसने उस चीज को भी आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि तुम्हें IIT क्यों नहीं जाना है और क्यों तुम्हें डिजाइन में जाना है. Can you tell our viewers about it a little bit? Ma'am, first of all, the concept is because I have 3-year degree course. I have pursued BBA, and if
have applied for the Further continuing this conversation with Priyanshu. So, Priyanshu, you were telling us about what your reaction was on the day of the examination of NIFT, right? कि आप NIFT का एग्जाम देने के आपने क्वेश्चंस देखा, तो what was your first reaction? Especially, I want to know more about the creative part because non-creative या objective part is okay. Everybody knows either it's a right answer or a wrong answer. What about the subjective part? in subjective part, there are more questions which are like to be known by the many of people. If I'm not a design background, still I have certain knowledge and certain understanding about the question. Like there is a question related to currency, and you have to create your own currency. After that, you have to draw like 4 or 5 currencies, and respect of that, you have to create your own with the name which you are going to express why you have chosen that currency and why you have chosen that logo. So I think many of them know about the currency, 5 to 6 currencies, and I just know only 4. So I just made anything, and just explain that why I'm doing this, why I'm doing this. And last, I have used the Bitcoin currency as my self-made currency to explain that why Bitcoin currency, not the actual the paper note or the hard. So the reason is that because it's not a cryptocurrency, we can convert into real money, and so if I express my own currency, then Bitcoin can be another currency which can formulate the transaction between the person to person. So my last currency was that, and similar to second question, there was a question related to how you have to create a portrait or landscape. लैंडस्केप बनाना था ना, सीन बनाना था. लैंडस्केप पोस्टर बनाना था जिसमें आप एक बैंक ऑफ रिवर के सामने खड़े हैं और आपके आपके मतलब उसमें 3-4 पर्सन को साधु टाइप थे, उसको उनके बीच में कन्वर्सेशन दिखानी थी. तो इसका आंसर मेरा मतलब बहुत फनी था क्योंकि मैं एक हफ्ते पहले ऋषिकेश चला गया था, निफ्ट के एक हफ्ते पहले, क्योंकि मेरे भैया की प्रॉब्लम था, उनको मतलब मेरी मौसी को प्रॉब्लम था, तो उनके कह रहे थे कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आप ऋषिकेश में वहाँ जॉली कराने में भर्ती होने वाले थे देहरादून की साइड पे. तो हम एक हफ्ते पहले ऋषिकेश चले गए थे. तो मुझे जब वहाँ पर त्रिवेणी घाट हम नहाते हैं वैसे कुछ ना, क्योंकि त्रिवेणी घाट जहाँ पर गंगा जी का जो मेन तट है, जो वहाँ पे जो शोर पड़ता है, वहाँ पे हम वहाँ रुके थे हम नहाने के लिए. तो फिर वहाँ पे सेम सिनेरियो बन रहा था कि वहाँ पे पंडित जी आते हैं, वो वहाँ पे वो मतलब अपना वो बाल सेट करते हैं, जनेऊ वेणु मतलब सब कुछ, वो कन्वर्सेशन चल रही थी, पूजा पाठ, वहाँ का मेन मंदिर था, शिव जी का मंदिर, वहाँ पर सब चल रहा था. तो मुझे उस चीज को मैंने सेम एक्सप्रेस करा अपनी ड्राइंग के अंदर. तो मुझे लगा कि शायद वो बेस्ट था मेरा आंसर जो मैंने बिकॉज़ आपने ऑब्जर्व किया उस सीन को. हाँ, उस चीज को ऑब्जर्व करा, क्योंकि मुझे उस चीज को मैंने एज एन पोर्ट्रेट नहीं समझा, एज एन इमेजिन करा कि क्या मैं कर रहा था वहाँ पे उस चीज को देख के. तो वहां पर एक एग्जाम्पल मिल गया कि मेरे पास आइडिया आ गया कि अगर मैं जिस चीज को है मेरे पास नॉलेज की क्या क्या हो सकता है, उस जगह अवेलेबिलिटी क्या क्या है, तो मैंने वही सेम चीज वहां पोर्ट्रेट करी अपने पेपर के अंदर. तो ये बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं कि आपके निफ्ट में आते हैं. और एक मैगजीन का क्वेश्चन था जिसमें आपको मैगजीन बनाना था, मतलब मैगजीन का फ्रंट पेज बनाना था. कोई एयरलाइंस के ऊपर, कोई एयरलाइंस है, आपको अपना खुद की एयरलाइन बनानी है, उसके एक पोस्टर बनाना है जो फ्रंट पेज पे लगेगा मैगजीन के. तो वो भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि मैगजीन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, मैगजीन का फ्रंट पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं. तो बेसिक क्वेश्चन है, तो कोई हार्ड नहीं थे लगे मुझे. हार्ड मतलब थोड़ा एवरेज थे, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें थोड़ा मुझे टाइम ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, राइट? यस मैम. तो जो इंसान अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है अच्छे से एंड इज ऑलवेज अवेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दोस आर द पीपल who can really score very well for these design entrance exam, right? So, and I know your observation power is like very strong. You want to see and want to observe and want to know about everything, which is great. And what about your interview? The interview का एक टिप क्या था जो मैंने दिया था आपको? Tip 5 minutes. Survi ma'am told me that if the interview goes beyond 5 or 10 minutes, then you have gone selected for the NIFT. And my interview was gone around 15 minutes. So जब मेरा 5 minutes complete हुआ तो मुझे लगा कि लगता है अब हो जाएगा, अब नहीं हो पाएगा या हो जाएगा. चांसेस 50-50 हो रहे थे.
एग्जाम्पल जब मैंने उनको अपना मॉडल शो करा जो मैंने बनाया था वैक्यूम क्लीनर, तो उनसे इंटरेस्ट जगा और फिर उन्होंने उस चीज पे मुझे फिर और ग्रिल करना शुरू कर दिया कि उसके अंदर दिखाओ तुमने क्या लगाया, प्रोपेलर लगाया है, कौन सा तुमने बैटरी लगाई है, तुमने चार्जिंग क्यों लगाया, तुमने वो क्यों करा। तो मैं उससे उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था। फिर आखिरी में जाकर फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन स्किल की जगह तुमने टेक्निकल स्किल में क्यों नहीं अप्लाई करा है, तुम आईआईटी क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो। फिर मैंने फिर बोला कि आई हैव applied for the CEED exam previous year and got selected into main IITs, IIT Hyderabad and IIT Roorkee. But because of my 3-year criteria, 4-year criteria, I didn't get selected. So they told me that, okay, so what about after NIFT? So I just told them that I want to be a design researcher. I want to be an observer, which can I help people to explain the thing which cannot be determined by other people. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किस चीज को ऑब्जर्व करता हूँ तो वो मुझे उसकी गारंटी नहीं कि लोग क्या कैसे ऑब्जर्व करते हैं, या कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ऐसे नहीं कि वो केवल आप ही फेस कर रहे हो, वो डिजाइनर की प्रॉब्लम हो सकती है कि डिजाइनर ने उस चीज को किस तरह डिजाइन करा है। फॉर एग्जाम्पल गेट डोर है, जैसे गेट है, हम किस तरह उसको खोलते हैं, अगर हम उसको टर्न करके खोलते हैं या फिर उसको रोटेट करके खोलते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो डिजाइनर की प्रॉब्लम है कि उसने किस तरह डिजाइन करा है उस चीज को। तो इस चीज में हमने एक्सप्रेस है कि हम इजियर जितना डिजाइन होगा उतना बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा, ऑब्जर्व करके यूज करेगा। और मैंने उस हिसाब से उनको थोड़ा आंसर अच्छा लगा तो उन्होंने कहा चलो वेरी गुड, तो बस उसके बाद एंड हो गया था मेरा। चलो great. So all's well that ends well. And yes, this tip always works. That, for example, in NID, I always tell my students that for online interviews, if you can hold on for 10 minutes, if your interview is going on beyond 10 minutes, that means you have chances to get selected, right? And in NIFT, if you don't have any chance to get selected, they would hardly waste more than 5 minutes on a student, right? Because they know what sort of marks you have got in your previous rounds. So according to that, they sit and they ask. So yes, anything beyond 5 minutes is great. And if they are asking you questions, if they are grading you, that's a very, very good sign. They want to know more about a student, right? बाकी चीजें वो आपको कॉलेज में सिखा देंगे, but they want to know what sort of a person you are, how you are reacting to a situation. Of course, आप बहुत stressed out होते हो उस समय, and उस stress में आप चीजें भूल तो नहीं जा रहे हो। इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक मशीन तो आपने बना ली, मॉडल बना ली, उसको आप भूल तो नहीं रहे हो। दोज आर द थिंग्स दैट यू वांट टू ऑब्जर्व। So this brings us to the end of the conversation. Priyanshu, we can go on and on discussing about it, but we have a little time constraint, and we would definitely like to hear from you once you get into the college, like once your college gets started. So we would definitely like to know about your experiences in the Design Institute, right, which you have been like dreaming for years now. So all the best, Priyanshu. Thank you so much for sharing such valuable inputs. I think it will be really helpful for all the design aspiring students, especially students who want to go for the M.Des, masters, and they are having different backgrounds. So I think they will get really encouraged by your words. Okay, so let's hope for the best. And thank you so much, Priyanshu, once again. All the best and have a great future ahead. Bye bye. Take care. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.